Hello guys, I am Milendra Surve. Today we are going to see the part 3, and in this section we have to solve the problem again on hydrostatic curve. So let's discuss what is the problem. A cylinder roller. So cylinder roller is given. Get 3 meter in diameter. So diameter of the cylinder roller is given as a 3 meter. Again, is placed on the dam in a such a way that water is just going to spill. Okay. If length of the gate is 6 meter, so in this question they have provided what is your length, that is 6 meter. In previous problem you have assumed the length or width is unity because they have not provided the information regarding that. So what we have to calculate magnitude and direction. So we have to calculate both magnitude as well as direction of resultant force. Now we have to calculate, that is nothing but resultant force Fr. Okay, due to the water acting on it. So this is water. So in this section the water is placed and the gate is of cylindrical section. This is cylindrical section of 3 meter diameter. So you have to calculate FH and FV. Okay, चलो अब इस प्रॉब्लम को कर लेते हैं. So सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें FH निकालना है और FV निकालना है. तो व्हाट इज प्रोसीजर, यू हैव टू फाइंड आउट प्रोजेक्शन इन हॉरिजॉन्टल. सो हमें फर्स्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है, उसके बाद वर्टिकल फोर्स निकालना है. तो प्रोसीजर क्या है हमारी, हमें सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है. सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल एक्ट एट दिस पॉइंट CG and that is nothing but half of the 3. So this is my CG point. Okay, so what is my x bar? My x bar will be this distance, and what is that distance? That is nothing but कितना होगा ये, half of the 3, 1.5 meter. Now what is next task? To locate center of pressure that is below the center of gravity. For that we have to project this point. So let's take this is A and this is B. Okay, so we have to project these points over here. So here is the water present. So after projection what we will get, if this is my plane, this is my A dash and this point is my B dash, is it? So this is my plane and that plane A dash and B dash, center of gravity, this is my center of pressure. So what is my this force from center of pressure? That force is nothing but FH. So we have to find out FH as well as FE. तो कैसे निकालेंगे, प्रोसीजर बाय प्रोसीजर. ओके, so we know the formula for FH. W A x bar. x bar तो पता है, रो G A x bar. तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले A निकालना है. तो A के लिए क्या पता होना चाहिए हमें कि कैसा है क्रॉस सेक्शन, प्रोजेक्टेड एरिया. सो प्रोजेक्टेड एरिया निकालना है हमें. For projected area, what is this cross section? This cross section is nothing but a simple line, or we can say this is my cross section. ये मेरा क्रॉस सेक्शन है. अगर मैं इसका प्रोजेक्शन इस प्लेन के ऊपर ले रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे लिया है, तो क्या हो जाएगा मेरा A डैश और B डैश ये पॉइंट, और इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, ये लेंथ होगा, कितना है लेंथ 3 मीटर, एंड ये लेंथ और विड्थ कितना दिया हुआ है, सो लेंथ ऑफ द गेट. सो इसे हम विड्थ भी कहते हैं. सो डोंट कंफ्यूज इन दिस. ओके, सो विड्थ. Last problem, last two problem they have not provided this data, but in this problem they have provided. So what is our area? Area is nothing but your length into width. Okay, projected area A dash B dash is equal to, what is length, this is 3 meter into this section is nothing but 6 meters. So my area is 18 meter square. So just we have to put the values, nothing else in that. Okay, so after putting value you will get FH. So 10 raised to 3, 9.81. What is area? 18 meter square. What is x bar? X bar is nothing but half of the 3 meter.
So after this calculation you will get the value in Newton. So just divide by 10 raised to 3, you will get value in kilonewton. So Fh you will get in kilonewton. Now what to do? Simultaneously you have to draw here pressure velocity figure, pressure figure. So this is my pressure figure, pressure diagram. Yes, and what my pressure diagram suggests? At A point my pressure is max than this B point. Why? We know the reason. Pressure will always act max at downward direction. So जैसे जैसे हम नीचे आएंगे जैसे प्रेशर की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी. तो ए की जगह पे हमें मैक्स प्रेशर मिलेगा, ये हमें पता है. और ये डिस्टेंस भी हमें पता है. ये डिस्टेंस कितना रहता है? h/3 पे तुम्हारा FH एक्ट करता है. FH अगर ये डिस्टेंस लेना है तो हम कितना लेते हैं? ये डिस्टेंस 2h/3. टोटल मिला के कितना होता है? h. सो हमें पता है कि फ्री लिक्विड सरफेस से कितने डिस्टेंस पे FH एक्ट कर रहा है. अगर मैंने क्वेश्चन पूछा तो आप क्या आंसर होना चाहिए? फ्री लिक्विड सरफेस B से FH विल एक्ट 2h/3 डिस्टेंस. सो व्हाट इज योर 2h/3? h कितना है यहाँ पे? h का पूरा 3 मीटर. तो 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 2 मीटर पे. फ्रॉम फ्री लिक्विड सरफेस यहाँ से FH का डिस्टेंस कितना आएगा? 2 मीटर. 2 मीटर पे फ्री लिक्विड सरफेस से हमारा FH एक्ट करेगा. ओके, उसके बाद हमें क्या निकालना है? FH के बाद हमें निकालना है व्हाट इज योर FV. FV के लिए भी हमने सेम प्रोसीजर देखी है. FV के लिए प्रोसीजर क्या है? अगर मैं FV के कैलकुलेशन के लिए जा रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए? रो जी इनटू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ड्यू टू द वॉल्यूम व्हाट काइंड ऑफ pressure force exerted over here. Okay, so you have to consider this volume due to this liquid. Okay, so liquid के लिए हमें पहला एरिया निकालना पड़ेगा कि कितने एरिया के ऊपर लिक्विड एक्ट कर रहा है. तो उसके एरिया के लिए हमें प्रोसीजर क्या है? हमें फर्स्ट वी हैव टू प्रोजेक्ट आवर कर्व पॉइंट. दिस इज माय कर्व AB. In this section only my water will exist here. In this section there is no water. So this is my curve AB. So I am projecting my A point up where? At free liquid surface. So project your A point. So this is my A dash. Now my B is exist over here. So my B dash is also here. So again now we have to select area of curve A to B. This is curve. Then B to B dash, B dash to A dash, and A dash to A. This is your regular procedure into your width. अगर ये आपने किया तो आपका प्रॉब्लम में आंसर इजी वे में फाइंड हो जाएगा. ओके, सम नाउ लेट्स टेक द कर्व A to B. B से लेके B dash, B dash से लेके A dash, बाद में A dash से फिर से हम कहाँ पे आएंगे? A पे आएंगे. So total area covered is nothing but only this half section. So we have to consider this only. So what is your answer for FV? 10 raised to 3 into 9.81 into area. Now what is the area of this? This is semicircle. So area of the semicircle is pi r square by 2 into width. If you solve this, you will get 10 raised to 3 into 9.81 pi. What is your r? R is nothing but this 3 meter diameter. So r is 1.5 meter. Square of that divided by 2 into what is your width? Width is nothing but length of the gate. So length of the gate is nothing but 6 meter. So you have to put here 6. After calculation you will get answer in Newton. Then you have to just divide by 10 raised to 3. You will get in kilonewton. Okay. So for this calculation the answer is for Fx you will get answer
264.87 kilonewton and FV 208.02 kilonewton. So these are the solutions, but this is not your final answer because you have to find out resultant force F. So what is resultant force? पहले लेक्चर में बताया था सबसे आसान तरीका फाइंड आउट करने का रिजल्टेंट फोर्स, जस्ट यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला Fh स्क्वायर प्लस F वर्टिकल स्क्वायर। ये दोनों भी फोर्सेस यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, Fh भी एक्ट कर रहा है और Fv भी एक्ट कर रहा है। सो रिजल्टेंट फोर्स यू विल गेट पुटिंग द वैल्यूज 264.87 plus 208.02. So this FR is equal to, we will get answer 336.79 kilonewton. This is the solution and this is in magnitude, but you have to find out also direction. For direction, what is formula? Theta is equal to tan inverse F vertical divided by F horizontal. So from this you will get answer theta is equal to tan inverse 208 divided by 264, that is your direction of 38.14 degree. This is the direction. Okay, so in this manner we have solved 3 problems in a hydrostatic force on a curved surface. So you have to just apply simple procedure step by step and follow Fh, Fv and these formulas. Okay, in some book they have provided with calculation of Fv. In case of calculation of Fv, there are various methods for calculation of Fv, but this is the very easiest method. So just follow this method to find out the solution and check what is the result getting from that. Okay, thank you.